Rahim. Today's topic is analog quantities. Analog quantities. The quantities whose value may continuously change is called the analog quantities. Quantities whose value may continuously change or remain constant is known as analog quantities. For example, temperature of the air in a 24-hour may continuous change, may continuous varies. For example, when we plot a graph between the time and the temperature, graph curved line will be obtained. It shows that temperature of the air in the 24-hour does not remain constant. Now I repeat it again. Analog quantities, such quantities which are continuously varies or remain constant, is known as analog quantities, whose values may continuously change. Such quantities whose value may continuously change or remain constant is known as analog quantities. For example, temperature of the air in the 24-hour does not remain constant. If we plot a graph between the time and the temperature, curved line will be obtained. This graph shows that the temperature in a 24-hour does not remain constant. It may be changed, continuously changed. These quantities are known as analog quantities. Now, in the experiment, in the examples, its example is public address system. Public address system. When we speak in a microphone, in a mic, then our voice, our sound will be continuously changed into electrical potential. When we speak in a microphone, our sound, it may consist of its example is public address system is analog quantity in which we speak in the microphone convert our sound into the electric potential. This electric potential may provide to the amplifier amplify it so that loudspeaker can operate it. Its other example is public address system is other example is. In this example, when we speak in microphone, our sound may change into the electric potential. This electric potential is further changed into analog signal, which is amplified by amplifier, so that loudspeaker can operate it. ऐसी मिक़दारें जो तसलसल से तब्दील हों या कांस्टेंट रहें उन्हें एनालॉग मिक़दारें कहते हैं. जैसे 24 घंटों में हवा का टेम्परेचर तब्दील नहीं होता है, एक जैसा रह जाता है, और ऐसी मिक़दारों को एनालॉग मिक़दारें कहते हैं. वक्त टेम्परेचर इसके एनालॉग मिक़दार हैं. अगर उनके दरमियान ग्राफ बनाएं, ग्राफ कोस्टल लाइन में हासिल होता है. वो ये ज़ाहिर करता है कि 24 घंटों में हवा का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है बल्कि तब्दील होता रहता है. इसकी दीगर मिसालें क्या हैं? वक्त, प्रेशर और फासला वगैरह क्या एनालॉग मिक़दारें हैं. ऐसा सर्किट जिसमें एनालॉग मिक़दारों का प्रोसेस किया जाए उसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं. इसकी मिसाल एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम है. जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमारी साउंड को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में तब्दील किया जाता है जो मुसलसल तब्दील होता है. एम्पलीफायर इसको इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, फिर इसको एम्पलीफायर की तरफ भेज देता है. एम्पलीफायर इसको इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि लाउड स्पीकर इसको क्या कर सके, आसानी से ऑपरेट कर सके. नाउ दिस ब्रांच डिफिनीशन, सच ब्रांच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स which consisting of a circuit in which analog quantities are processed is called the analog electronics. Branch of electronic consisting of circuit which process the analog quantity is called the analog electronics. Its other examples are analog quantities. Other example are distance, pressure and the time. Now analog quantities are used in radio, television and the speaker. वो सर्किट जिसमें एनालॉग मिक़दारों का प्रोसेस किया जाए उसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं. इसकी दीगर मिसालें वक्त, प्रेशर और क्या है, फासला हैं. हम इसको ये कह सकते हैं आजकल रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन इसकी क्या आम मिसालें पेश करते हैं. इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 2 टाइप बन रहे हैं. पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है एनालॉग मिक़दारें क्या होती हैं. व्हाट आर द एनालॉग क्वांटिटीज़? सच क्वांटिटीज़ विच में कंटिन्यूसली चेंज आर रिमेन कांस्टेंट इज़ नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़. इसकी तरफ यह है ऐसी मिक़दारें जिनकी कीमत एक तसलसल के साथ तब्दील हों या कांस्टेंट रह जाएँ, एक जैसी रह जाएँ, उन्हें एनालॉग मिक़दारें कहते हैं. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यह है एनालॉग मिक़दारों की मिसालें दें. गिव द एग्जांपल ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज़. एनालॉग क्वांटिटीज़ की मिसालें, ये 3 टाइप से मिसालें दी गई. वक्त, प्रेशर एंड डिस्टेंस. वक्त, प्रेशर और फासला क्या एनालॉग मिक़दारें हैं. टाइम
temperature and the pressure. Time, temperature, pressure and the distance are the analog quantities. Analog quantities examples are time, temperature and the pressure are the analog quantities. This was the topic of today. Learn it please. Allah Hafiz.